Welcome to you all in our Science Fair channel. This is lecture 4. I am here to teach you biology, the fundamental unit of life, cell. So in lecture 3 we have discussed about the plasma membrane and the process of osmosis in the three conditions. So today also we first revise the process of that three condition which is arise through osmosis. Then we'll move toward the new topic, that is cell wall. So you know clearly what is plasma membrane, what is the function of plasma membrane. It is the outermost covering of the cell. And what is it is the outermost covering of the cell. Which type of covering? Which separate the content of cell from its external environment. जो सेल के अंदर के कंटेंट को दूर रखती है बाहर के environment से. The plasma membrane allows, now the function, what is the function of plasma membrane? It allow or permit only few material to in and out of the cell. That is why due to this function only the cell is known as the cell membrane or plasma membrane is known as the selective permeable membrane. So this is one question which they will ask, why plasma membrane is called selective permeable membrane. Okay, so in this they are telling it is called selective permeable membrane because it allows certain few substance. तो किस तरीके से अलाउ करती है, कैसा मूवमेंट रहता है? The movement is take place by two process, that is diffusion and osmosis. पढ़ा हम लोग ने. What is diffusion? Diffusion is the movement of gases. Which type of gases? Carbon dioxide and oxygen move across the selective permeable membrane. That is, so the definition of diffusion and osmosis is same, but you have to put one thing, that in case of diffusion you have to write down that this is the movement of gases, and in case of osmosis there is a movement of water. Okay, but the from where? From a region of higher concentration to a region of lower concentration through selective permeable membrane. So this much we have done. After the definition of osmosis and diffusion, we already moved toward the osmosis, the condition of the osmosis. What are the three things could happen if we put an animal cell or a plant cell in a solution of sugar or salt? First one is the hypertonic solution, second one is iso, and then hyper. In hypotonic solution, firstly the solution become more, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन. आप इस तरीके से समझिए कि एक बीकर है, उसके अंदर सेल रखी है. सेल के बाहर के जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है मीडियम का, वो ज़्यादा होता है बिफोर दिस प्रोसेस. इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पहले ज़्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, तो इन सेल से ज़्यादा है. सेल में कम वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, तो व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ सेल? सेल क्या कर रही है उस टाइम? दे टेक द वाटर फ्रॉम आउटसाइड, एंड उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? द सेल बिकम स्वेल अप. वाटर सक करने के बाद सेल बिकम स्वेल अप एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड, इज बिकम मोर इनसाइड द सेल देन आउटसाइड. बाहर कम हो जाती है. एंड आफ्टर दिस प्रोसेस दिस सोल्यूशन इज नोन एज द hypotonic, means less solution. Okay, in such condition the cell becomes swell up. Second case is isotonic. In this condition the water concentration outside the cell and inside the cell is equal. तो net movement नहीं होता है क्योंकि water concentration दोनों तरफ एक जैसा है. In such case the cell will stay the same size, there will be no changes. Third case is the hypertonic solution. Now in hypertonic solution the concentration of water is more inside the cell than outside the cell before the process. Okay, so such in such conditions cell will give out the water outside, release the water outside. So after this process, after the process of osmosis, the cell become shrink. Okay, because it lose the water, इसलिए वो कैसा हो जाएगा? shrink हो जाएगा. And the condition of the water, condition of the medium outside the cell become hypertonic.
अब ज़्यादा हो जाएगी, पहले कैसे थी, कम थी. सो दीज आर द थ्री कंडीशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड hypertonic solution. After that, we have seen the example of osmosis in case of the absorption of water by plant root, exchange gases. Plasma membrane is flexible. We have seen the example of the amoeba also, that it is having they are engulfing the food with the help of the so because of the flexibility of the plasma membrane, they done the process of endocytosis by which they can engulf the food. Okay, they take the food from that process. Then after this we have completed the points of the plasma membrane. Now we will move toward the topic cell wall. Cell wall. Plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. Rigid means rough. Okay, so in animal cell or in a human being, we don't have the cell wall, we have only cell membrane. But in plant cell, there have additional membrane that is known as cell wall. Cell wall lies outside the plasma membrane, बाहर होती है उसके जस्ट. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. So this thing is important. What is cell wall? It is the membrane which lies outside the cell membrane. Okay, what is the function of the cell wall? We have seen. Now they are telling about it is composed of which material. It is composed of cellulose, so you have to underline this one. It is made up of cellulose. Cellulose, what is cellulose? It is a complex substance and provides structural strength to the plant. Okay, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को. यू नो वेरी वेल that plant is not able to move like us. Okay, वो इधर उधर नहीं जा सकता है. ठीक है, so we are not able to plant is not able to move like us, so they have some structural strength to plant. They have some substance, it is made up of complex substance. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. We can observe the phenomena by performing the following activities. Now here you have to learn one definition. What is plasmolysis? Plasmolysis किसे कहते हैं? ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट सेल क्या करती है, वाटर लूज करती है. ऑस्मोसिस हम पढ़ चुके हैं, थ्रू ऑस्मोसिस. तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो लूज़ करती है वाटर, यू हैव ऑलरेडी सीन द केस ऑफ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन. तो सेल कैसी हो जाती है, देयर इज़ अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. तो सेल वॉल से वो सेल कंटेंट दूर हो जाता है. इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. व्हाट इज सेल वॉल? It is composed of which material? What is cellulose? And what is the definition of plasmolysis, or what do you understand by plasmolysis? You have to learn this much in this paragraph. Cell wall permit the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. In such media, the cell tends to take up water by osmosis. The cell swells, build up pressure against the cell wall. The wall exert an equal pressure against the swollen cell because of their wall. Such cell can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. So because of this process, they टेक द वाटर और वो स्वेल अप हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को स्टैंड करा सकते हैं सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से दैन एनिमल सेल. नाउ वी मूव टूवर्ड सम फ्यू पॉइंट्स विच यू हैव टू लर्न. व्हाट आर दोज पॉइंट? It is found in plant cell outside the plasma membrane.
इट इज़ रिजिड कवरिंग विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी रहती है, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है ताकि वो खड़ा हो सके। अगर पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो वो प्रॉपर तरीके से स्टैंड हो सके। ये नहीं कि पानी गिरा, बारिश हुई है, किसी ने पानी फेंका तो वो प्लांट कैसा हो, गिर जाए, ठीक है, लाई डाउन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि वो रिजिड होता है, रफ होता है और उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल की तरह नहीं होता कि वी आर एबल टू मूव विद आ अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन। ओके, हम अपने सिचुएशन के हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट दे आर नॉट एबल टू मूव अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, ओके, और अकॉर्डिंग टू देयर विल। इसलिए इनके पास एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज सेल वॉल। So we will finish it here. We will move toward the next topic, nucleus, in the next class. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।